back, students, to standard 10th maths or science queries, and this is session 2. Though there are no science queries in this session, only maths queries are there. Yes, the first one is from Chris. Yeah, maths from statistics. All right, let's see. The mean of 10 observation is 30. So what information we have in the first statement? The mean of 10 observations. So number of observations is 10 and mean is 30. So x bar is 30. All right. Of this, 2 observations are taken by mistake as, that is wrong one. 5 instead of, this is correct one. And 15 taken as 15, wrong one. Instead of 25, this is correct one. Then the correct mean is dash. You are supposed to find the mean. Of course, the correct mean, because this mean is incorrect, the mean given is incorrect, and the reason 2 of the observations are wrongly taken. Acha. Now our target is mean. The formula is sigma xi upon n. The number of observation you have 10, correct? Okay, children, now you know the formula. X bar is equal to sigma xi upon n, where sigma xi is the sum of observations. Take n on other side, so n into x bar is equal to sigma xi. This is sum of observations. Now you know n is 10 into x bar is 30, that is equal to sigma xi, i.e. sigma xi is equal to 300. But you know this sum of observations, ये 10 observations जो है उसका जो sum है वो गलत है. This is incorrect. Why it is incorrect? Because 2 observations are wrongly taken. So now I can give the title like this: correct sigma xi. Correct sigma xi. That is incorrect sigma xi minus wrong observation plus correct observation. Another observation is also there. So minus wrong observation plus correct observation. Alright. Now what is incorrect sigma xi? 300 minus wrong observation. I put cross mark. That is 5. Plus the correct one. That is 15. Once again minus wrong observation. That is 15. And I am going to add the correct one. That is 25. So you have 300 minus minus उसका total करो minus 20 plus plus उसका total करो 40 और plus sign. So this is 300. ये दोनों different sign subtract करो तो 20 और बड़ा positive. So that is 320. So now you get the final answer. What is correct sigma xi? 320. Divide by number of observations. आपने 2 observations निकाल दिए और 2 नए डाल दिए. So number of observations are retained. 0 0 cancel, and that is 32. So what is new mean? Yeah, correct mean 32. So correct mean is 32 here. All right. Now next one. Sum of deviation. इसको deviation कहते हैं. इसको जरा समझ लीजिए. Children, I am going to choose one data of 5 observations. 12, 25, 15, 18 and 30. This is one data having 5 observations. Correct? This is one data given to you. Observation 1 xi, observation 2 x2, observation 3 x3, x4, x5. जरा समझिए children. इसका mean क्या हुआ? 12 and 18 30, 30 and 30 60, 60 and this 40 100 upon 5, so that is 20. इस डेटा का मीन है 20. What is the mean of this data? 20. Children, I am going to write one statement here
that is deviation of observation from mean. मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन मीन से कितना दूर है, उसके लिए मुझे सिंबॉलिकली लिखना पड़ेगा xi माइनस x बार, ब्रैकेट में लिख दो. ओके, पहले x1 माइनस x बार. x1 12 है, x बार 20 है. व्हाट इज 12 माइनस 20? दैट इज माइनस 8. चलो, x2 सेकेंड ऑब्जर्वेशन माइनस मीन. 25 minus 20, that is 5. So what is xi minus x bar? 5. Okay, third observation minus x bar. 15 minus 20, that is minus 5. Fourth observation x4 minus x bar. 18 minus 20, that is minus 2. Last observation x5 minus x bar. 30 minus 20, that is 10. Children, ये हर एक में अलग अलग लिखने से हमने एक ही सिंबल में लिखा है xi minus x bar, which is verbally called as deviation of observation from mean, or it is called mean deviation. Mean deviation. It is called mean deviation. All right. शॉर्ट में कहते हैं mean deviation xi minus x bar. उसका मैं नीचे सम कर दूं. सम ब्रैकेट में लिखना जरूरी है xi minus x bar. यदि आप ब्रैकेट नहीं लिखते हैं, xi माइनस x बार ही लिखेंगे, तो ये तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दो अलग टर्म हो जाएंगे. यहां सम एक ही टर्म है. ऑलराइट, नेगेटिव्स का टोटल माइनस 15 आ रहा है, पॉजिटिव्स का टोटल प्लस 15 आ रहा है, और सम 0 आ रहा है. सो व्हाट इज द सम ऑफ, इसको कहते हैं सम ऑफ डेविएशन. दिस इज कॉल्ड सम ऑफ मीन डेविएशन. सम ऑफ मीन डेविएशन, उसको ब्रीफली कहते हैं सम ऑफ डेविएशन. इन स्टैटिस्टिक्स वी कॉल इट सम ऑफ डेविएशन. सम ऑफ डेविएशन मीन्स सिग्मा ब्रैकेट में xi माइनस x बार एंड इट इज 0. इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. चिल्ड्रन, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. समझ लो, मैं यहां एक और ऑब्जर्वेशन ऐड कर देता हूं एंड आई कॉल इट x6. तो अब 6 ऑब्जर्वेशन हो गया. तो मीन, ये 5 का टोटल तो 100 था ही, और 108, और ऑब्जर्वेशन 6 हो गए. तो 6 1 जा 6, 6 8 जा. सो नाउ द मीन इज 18. ये 6 ऑब्जर्वेशन वाले डेटा में मीन इज 18. ऑलराइट, तो अब xi माइनस x बार, xi माइनस x बार 12 माइनस 18 माइनस 6, 15 माइनस 18 प्लस 7, 15 minus 18 minus 3, 18 minus 18 0, 30 minus 18 12, 8 minus 18 minus 10. Now ये 6 ऑब्जर्वेशन हो गए. सिग्मा xi माइनस x बार, देखो पॉजिटिव्स का टोटल 7 और 12 19 विथ प्लस साइन, और नेगेटिव 6 3 और 10 19 विथ माइनस साइन. So that is equal to 0. So sum of deviation is always equal to 0. But take care, it should be bracket. Children, यदि ब्रैकेट यहां पहले केस में सिग्मा xi माइनस x बार i runs from 1 to 5, क्योंकि 5 ही ऑब्जर्वेशन से डेटा में, that is equal to 0. सेकंड केस में सिग्मा xi माइनस x बार and i runs from 1 to 6, but that is also equal to 0. So sum of deviation, इसको कहते हैं sum और इसको कहते हैं deviation, mean deviation या simply deviation. Sum of deviation is always equal to 0. फिर यहां आप 100 ऑब्जर्वेशन लो, 50 लो, 1 मिलियन ऑब्जर्वेशन ले लो, the sum of deviation is always 0. Okay. लेकिन यदि इसी केस में सिग्मा xi i runs from 1 to 5 माइनस x बार होता, तो चिल्ड्रन दिस इज फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म होता. इस कंडीशन में क्या मिलता आपको? नाउ यू नो x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n. i रन्स फ्रॉम 1 to 5, ऐसे लिख लो इस तरह. सो और n इक्वल टू 5 हो जाएगा. n 5, टोटल ऑब्जर्वेशन 5 को उस बाजू ले जाओ, तो सिग्मा x बार इज इक्वल टू 5x bar is equal to sigma xi, I runs from 1 to 5.
सो यहां आप लिख लो 5x बार और ये है -x बार, सो दैट इज इक्वल टू 4x बार। सो आपको ये जवाब मिल गया। चिल्ड्रन, सिग्मा xi I runs from 1 to 5 minus x bar is 4x bar। सेकंड केस में सिग्मा xi I runs from 1 to 6 minus x bar, नो ब्रैकेट, यहां दो टर्म। चिल्ड्रन, जैसे ये 1 to 5 सिग्मा xi 5x बार हुआ, 1 to 6 होगा तो ये 6x बार होगा, यहां 6 होगा ना, 1 to 6 होगा तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन here 6 into x bar it will be 6x bar। So here sigma xi when I runs from 1 to 6 is 6x bar और यहां -x bar, so that gives you 5x bar। Alright children, so यहां दो सम से आप समझ लीजिए, sigma xi I runs from 1 to 10 minus x bar, दो अलग टर्म हुए, so then it is 1 to 10, 10 में से कम कर लो, 9x bar is the answer। sigma xi if I runs from 1 to n minus x bar, then यहां n तक है, so n minus 1 into x bar। But if it is like this, I runs from 1 to n और ब्रैकेट में दे दिया xi minus x bar, then the value is always 0। Is that clear children? Good। So proceeding further, now I've got a question from Manav, that is number 3। Yeah, it is from arithmetic progression, and Bhagya has two questions from same chapter, arithmetic progression, 4th and 5th। Let's see the 4th one। Find the sum of all integers from 50 and 750 which are divisible by 3 as well as 5। Children, divisible by 3 as well as divisible by 5 means divisible by 3 multiplied by 5। Yeah, so divisible by 15, any number which is divisible by 15 will be divisible by 3 as well as divisible by 15। So divisible by 3 as well as divisible by 5 means divisible by 15। Alright, पहले मैं 50 को डिवाइड बाय 15 कर लूं और 750 को डिवाइड बाय 15 कर लूं। एक और चीज, from 50 means you have to start with 50 and 750, मतलब 750 और 50 both are included। चलिए देख लीजिए, 15 3s are 45 5, so this 50 is not a multiple of 15, so आप 50 में से वो रिमाइंडर निकाल दीजिए, so 45, so 45 is a multiple, लेकिन 45 50 और 750 के बीच नहीं आता है, it doesn't exist from 50 to 750, ये 50 के बिलो आता है। so यहाँ we need a multiple of 15, so I add 15, so I got 60। so 60 is a multiple of 15, ये multiple है जो 50 from 50 to 750 में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, 15 5s are 75 0, bring down 0 तो डिवाइड करना ही है, 50 zeros are 0 and 0, so remainder is 0, so 750 is a multiple of 15। alright, so now you got AP children। पहला नंबर है 60, 60 में 15 ऐड करो 75, 15 ऐड करो 90 डॉट 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 और आखिरी वाला 750, 750 will be included because it is a multiple of 15। so since it is multiple of 15, it will be divisible by 3 as well as 5। clear? now we are supposed to find the sum। all right, what is the formula to find the sum? Sn is equal to n by 2 into a plus l। I chose the second formula because you have last term but you do not have number of terms, so first you will have to find n। okay, this is a1, this is a2, this is a3 and this is an। should I write directly children? an is equal to 750, can you see that? but what is the formula for an? a plus n minus 1 into d, that is equal to 750। directly I am writing what is a?
A1 is A, that is 60, plus D, the value is positive 75 minus 60, that is 15, into n minus 1, that is 750. Therefore, 15 times n minus 1 is 750 minus 60. That is going to be 690. 15 ones are, 15 fours are 60, and 15 six are 90. Correct? So n minus 1 is equal to 46. Therefore, n is equal to 46 plus 1, and that is 47. Now your final goal. I'm writing it here. Sn is equal to n by 2 into a plus l. You got n. 47 by 2 into a. That is 60 plus last term. That is 750. Yes, the calculation continues here. 47 by 2 into below 0, 11 or 8. 2 ones are, 2 fours are, zeros are, 5s are. So 405 multiplied by 47. 0, 20, 16, 35, 28, 5, 3, 0, 9 or 1. So that is 19035. So the sum is going to be 19,035. That's the answer. Clear? Okay. These two are questions from Bhagya. Bhagya, you wrote, you don't know what is to be done here. Children, Bhagya, this is very simple, very simple. You haven't watched the videos properly, that means. Okay? Never mind. Now this is revision session. I cannot teach you in detail. You please see the video. Watch those videos again from YouTube. Alright. A3 is given, which is 15. And that is equal to A plus 2D. 3. So 2D. S10 is given. S10 is given. That is 125. But that is 10 by 2 into 2A plus 9D. समझ में आ रहा है अभी? A3 is equal to A plus n minus 1 into D. So what is n? N I took 3. So A plus 3 minus 1, that is 2D. And then what is Sn? N by 2 into 2A plus n minus 1 into D. But here you are given S10. So instead of n, I took 10. So 10 by 2 into 2A plus 10 minus 1, and that is 9D. I got equation number 1. I got equation number 2. Alright. Children, please pay attention. यहाँ कुछ cancellation होगा. 2 ones are, 2 5s are. 5 ones are, 5 2s are, 2 bacha, 5 5s are. So first equation is A plus 2D, which is 15. Second equation, 2A plus 9D, which is 25. Correct? Alright, elimination method करिए. यहाँ 2A है, so multiply this with 2 and this with 1. So ये पूरा equation 2 से multiply करो. 2A plus 4D is equal to 30. And this remains same. Second one, 2A plus 9D is equal to 25. Now subtract कीजिए. Minus, minus, minus. So this is gone. Minus 5D is equal to plus 5. So 5D is minus 5. Therefore D is 5 ones are, 5 ones are, minus 1. So what is D? Yes, D is equal to minus 1. Now we are supposed to find A10. A10 is A plus 9D. You will need a D, तो D तो है, और you will need A also. So आप पहले इक्वेशन में डाल दीजिए. A plus 2 into D, that is minus 1 is 15. So A minus 2 is 15. Therefore A is 15 plus 2, that is 17. So 17 मिल गया वो भी. So A is 17 plus 9 into D is minus 1. So that is 17 minus 9, and that is 8. So 10th term, A10 is 8. Correct? Understood now? Sure? Okay. A similar question. D is 5 and S9 is 75. Then find A and A9. Now this is better, simpler. Alright. Let's see. S9 is 75. That is equal to 9 by 2 into 2A
plus 9 minus 1, that is 8d. Now value of d is known, d is equal to 5. I call this 1. Alright, so by 1 we have 75 is equal to 9 by 2 into 2a plus 8 into d, that is 5. बस आपके इक्वेशन में सिर्फ a बचा है, a unknown. Okay, so this is linear equation in one variable, easy to solve. Okay, 75 multiplied by 2 upon 9, that is 2a plus 8 5s are 40, 3 3s are 3 15s are 3 25s are, sorry, yeah. So 3 remains here. So you have 50 upon 3 minus 40 is equal to 2a. 3 3s are 9 and 3 25s are, so 15 2s are, sorry, 25 2s are 50. Upon 1 LCM निकालो, 1s are or 3s are, so 50 minus 120 is equal to 2a. So that is minus 70 upon 3 is equal to 2a. 2 1s are 2 35s are. So a is equal to minus 35 upon 3. So value of a is minus 35 upon 3. कुछ विचित्र value आई. Anyway, now you want to find a9, that is a plus 8d. Now what is a? Minus 35 upon 3 plus 8 into d. d की value 5 है. So minus 35 upon 3 plus 40, 40 upon 1. So LCM is 3 1s and 3s are, minus 35 plus 120. So minus 8, in fact plus 85, because positive number is larger one upon 3, और ये divisible नहीं है. So this is a9. So a9 is here and a is here. Is that clear, children? Fine. All right. I have 2 more questions from Rudra. All right. Yes, the one is from probability and the other one is from first chapter real numbers. Rudra, this type of sums, okay, yeah, this concept is omitted. Why do you ask this type of questions, or why are you preparing this type of questions at this stage of your study? You should avoid. Since you have asked, I'm going to do, but please don't ask, don't study this type of sums just now. Okay, chaliye. First we'll solve the 6th one. If a die making company makes an error while making a die, जब डाई बनाने की कंपनी ने डाई बनाई तो उसमें कुछ एरर आई. Now what was the error? They leave 2 faces of die blank. How many faces die has? 6 faces, correct? जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 नंबर्स होते हैं. Alright? Now by error during the manufacturing 2 faces remain blank. अभी कौन से नंबर वाले फेसेस है और कौन से नंबर वाले फेसेस ब्लैंक है? सपोज ऐसे कर देते हैं, ये या ये ब्लैंक. आई एम पुटिंग डैश फॉर दैट. सो जो डाई है कुछ ऐसा है, एक फेस पे 1 है, दूसरा फेस ब्लैंक है, तीसरा फेस पे 3 है, चौथा फेस पे 4 है, पांचवा फेस ब्लैंक है और छठा फेस पे 6 है. लेकिन ऐसा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हमें ऑल पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना पड़ेगा. द रिमेनिंग 4 विथ नंबर्स ऑन इट. यस, आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4 रिमेनिंग 4 फेसेस के ऊपर नंबर्स है, लेकिन कौन से नंबर वो यहां बताया नहीं है. मैंने तो यहां एक एग्जांपल दिया कि ऐसा फेस ऐसा डाई हो सकता है विथ 4 नंबर्स ऑन 4 फेसेस एंड 2 फेसेस ब्लैंक, बिकॉज विच नंबर्स आर देयर ऑन द डाइस आर नॉट मेंशन्ड, या विच नंबर्स आर मिसिंग दैट इज नॉट मेंशन्ड. ओके, सो डाई नंबर 1 पे ऐसा हो सकता है, फर्स्ट फेस ब्लैंक, सेकंड फेस ब्लैंक, फिर आपके पास 3 आया, 4 आया, 5 आया और 6 आया. These are the 6 faces, 2 blank and 4 with numbers. Dice number 2, first face blank, second place पे 2 है, third face blank, then you have 4, 5 and 6. Dice number 3 कुछ ऐसा हो सकता है, फर्स्ट फेस ब्लैंक, सेकंड फेस पे 2 है, थर्ड फेस पे 3 है, फोर्थ फेस ब्लैंक है, फिफ्थ और 6 नंबर वाला है. डाइस नंबर 4
ब्लैंक 2 3 4 ब्लैंक 6, 2 फेसेस ब्लैंक, 4 फेसेस के ऊपर नंबर। डाइस नंबर 5 ब्लैंक 2 3 4 5 और ब्लैंक। अब आगे ब्लैंक नहीं हो सकता है, सो पहला वाला मैंने ब्लैंक रखा। अब दूसरे स्थान वाले ब्लैंक फिक्स करते हैं। सो डाइस नंबर 6 1 है, ब्लैंक ब्लैंक 4 5 6, 4 नंबर्स है, 2 ब्लैंक है। D7 1, सेकंड पे ब्लैंक, थर्ड वाला है, फोर्थ पे ब्लैंक, फिफ्थ और सिक्स। अब 5 पे ब्लैंक रखेंगे। डाई नंबर 7 1 डैश 3 4 डैश 6। डाई नंबर 9 1 डैश 3 4 5 डैश। अब डाई नंबर 2 पे फिक्स हो गया, नाउ 2 और 3 हो गया, नाउ 3 एंड 4। डाई नंबर 10 1 2 3 और 4 ब्लैंक, 5 एंड 6। अब 3 को फिक्स रखते हैं ब्लैंक और 5 को ब्लैंक कर देते हैं। डाई नंबर 11 1 2 3 4 वाला है, फिफ्थ ब्लैंक है और 6। डाई नंबर 12 1 2 3 4 5 और डैश। अब फोर्थ और फिफ्थ ब्लैंक रखते हैं। डाई नंबर 13 1 2 3 डैश डैश और 6, 4 नंबर है, 2 ब्लैंक है। डाई नंबर 14 1 2 3 डैश 5 है और डैश, दैट्स इट। और डाई नंबर 15 1 2 3 4 डैश डैश, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। सो 15 अलग अलग डाइस बन सकते हैं, क्योंकि हमको मेंशन नहीं किया है कि विच फेसेस आर ब्लैंक एंड विच फेसेस व्हाट नंबर्स आर देयर ऑन द रिमेनिंग फेसेस। सो 15 डिफरेंट डाइस आर पॉसिबल। 15 डाइस आर पॉसिबल, डाई का प्लूरल डाइस आर पॉसिबल, ऑलराइट। अब देखो, इफ दैट डाई, मतलब ये कौन सा डाई है पता नहीं, उसमें से कोई भी एक डाई, इफ दैट डाई विथ एरर इज थ्रोन एट रैंडम, then find the probability of getting 4 on it. Find the probability of getting 4 on it. Children, total outcomes क्या होगा? कोई भी डाई फेंको तो 2 डैश आएगा और 4 नंबर आएगा, कोई भी 4 नंबर, है ना। सो टोटल आउटकम्स आर 6। सो टोटल आउटकम्स आर 6। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, डाई नंबर 1 में 4 है, डाई नंबर 2 में 4 है, डाई नंबर 3 में नहीं है, डाई नंबर 4 में है 4, 5 में है, 6 में है, 7 में नहीं है, 8 में है, 9 में है, 10 में 4 नहीं है, 11 में 4 है, 12 में 4 है, 13 में 4 नहीं है, 14 में 4 नहीं है, 15 में 4 है। चिल्ड्रन, आउट ऑफ टोटल 15 डाइस, पॉसिबल डाइस, 1 2 3 4 और 5 डाइस में 4 नहीं होंगे और रिमेनिंग 10 डाइज में 4 होंगे। ओके, टोटल आउटकम्स तो 6 है और कोई भी डाई हो, सपोज के ये डाई हो, सो एक 4 है, सो 1 आउट ऑफ 6 इज द प्रोबेबिलिटी। इसमें भी 1 आउट ऑफ 6 प्रोबेबिलिटी, इसमें है ही नहीं, है ही नहीं, सो 0 आउट ऑफ 6, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल, 4 मिलेगा ही नहीं। डाई नंबर 3 आप मिलियंस टाइम रेंडमली थ्रो करिए, आपको टॉप पे फेस 4 आने वाला नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। सो प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट, सो प्रोबेबिलिटी इज 0। ये डाई लोगे तो देर इज 1 आउट ऑफ 6, ये डाई लोगे तो 1 आउट ऑफ 6 विल बी प्रोबेबिलिटी, ये 1 आउट ऑफ 6, ये इम्पॉसिबल है, सो 0, ये 4 है, सो 1 आउट ऑफ टोटल 6, 4 है, 1 आउट ऑफ 6, इम्पॉसिबल इवेंट 4 है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0। यहां 4 है, सो 1 आउट ऑफ 6 है, 1 आउट ऑफ 6, 0 0 और 1 आउट ऑफ 6। सो चिल्ड्रन, द आंसर इज, ओके, इफ द डाई हैज नंबर 4 ऑन इट, then its probability. If die has number 4 on its face, then its probability is 1/6. And if die doesn't have 4 on its face, then its probability is 0.
Clear, children? Okay. The last one. If A and B are two odd positive integers where A is greater than B, then prove that one of the two numbers, ये number और ये number, दो में से एक is odd and the other is even. Children, आपको odd और even numbers का concept पता होना चाहिए. Even number is represented as 2n. Yes, multiple of 2, 2n. So that is always even. Take n equal to 1. So 2 ones are 2. 2 loge to 4. 3 loge to 3 twos are 6. So 2, 4, 6, 8, 10. That is what you are getting. And they are even numbers. So even number is represented as 2n. Odd number. Children, 2n में एक add कर दो. So this is 2n plus 1. आप 4 हो, उसमें 1 add करो तो 5 हो जाता है. अरे वो 4 में आप 3 ऐड करो, ऑड नंबर ऐड करो तो 7 हो जाता है ऑड. 4 में आप 9 ऐड करो, ऑड नंबर ऐड करो तो दिस इज 13 ऑड. सो चिल्ड्रन यहां 2n प्लस 3 भी ऐड कर सकते हैं, 2n प्लस 5 भी ऐड कर सकते हैं, 2n प्लस 7 भी ऐड कर सकते हैं. सो आई एम राइटिंग 2n प्लस k, वे ये k इज एनी ऑड नंबर, ऑड इंटीजर. k इज एनी ऑड इंटीजर. इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? श्योर? Now, children, please pay attention. A and B are two odd positive integers. Both are odd positive integers. Let A be equal to 2n plus k. 2n plus k. Is that clear? Where k is odd integer. Correct? Okay. Now, and B 2n plus 1. 2n plus, children क्या करूं ना, यहां भी मुझे odd ही चाहिए ना. I'll write k. ये तो इक्वल हो गए. A has to be greater than B. All right. A has to be greater than B. So I'm writing here, ये odd ही होना चाहिए. Odd number 3 में आप odd number plus करोगे तो even हो जाएगा. So I'm adding 2 here. Please, ये आपको समझना होगा. Where k is odd integer. Odd में even इससे बड़ा करना चाहिए. Sorry. हाँ चलो. I'll write 2 here and k here. तब a greater than b होगा. Right? 2n में k प्लस किया, यहां 2n में k प्लस 2 किया, मतलब दिस इज बिगर. सो a इज बिगर. ऑलराइट, नाउ देख लीजिए a प्लस b अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट इज a? 2n प्लस k प्लस 2 प्लस 2n प्लस k होल अपॉन 2. 2n प्लस 2n 4, k प्लस k 2k प्लस 2n होल अपॉन 2. 2 is common. 2n plus k plus 1 whole upon 2. 2 cancels. So that is 2n plus k plus 1. Now k is odd. Therefore k plus 1 is even. है ना? कोई भी odd number, कोई भी उसमें plus 1 करोगे तो even हो जाएगा. देखो. So k plus 1 is even. और ये already even number है. और even में even add करोगे तो that is even. Correct? So a plus b by 2 is even. Prove. Now you have to prove that a minus b by 2 is what? Now a is what? 2n plus k plus 2 minus b. अब ब्रैकेट में लिखना है, जगह नहीं है, so I am opening the bracket directly. So ये minus 2n minus k हो गया whole upon 2. This cancels, and you got 2 upon 2, 1, which is even odd, which is odd. So here a minus b by 2 is odd. Proved. Is that clear, children? This can be solved by number of ways. आप अलग अलग तरीके से इसको solve कर सकते हैं. Is that clear? Okay. So see you in the next query session. I didn't have any queries from science, children. Okay, only from maths. So that's what I have solved with you. See you then in the next query session.
Till then, goodbye. Have a nice day, children.